Okay, so that's that. So lastly हम लोगों ने कुछ URL patterns learn किए थे in the last session, and we just test these URLs like articles 2003. So what is that articles 2003? जैसे आप लिखोगे localhost colon whatever the port number you just use to launch your Django framework or Django server. So consider in my system the by default configuration is there. So 8000 is a port number. So localhost colon 8000 then slash articles slash 2000 will actually match with this one. Okay, and after that अगर मैंने यहाँ पे कुछ डायनेमिक डेटा पास करना है जैसे कि articles/5 articles/10 like that. In short, in the place of 2003, if you want to pass some dynamic values, okay, dynamic URLs if you want to generate, then you can just go through this one. Okay, so what you have to do, we have to just write down, we have to just use angular bracket, and inside that you have to specify data type and then actually variable name. So that variable name will work as actually keyword argument. In short, this thing will be considered as ये actually किस तरीके से manage होगा. This path actually call the function from views.py file. Views.py file से कौन सा function call होगा? Year archive. So it will call this year archive. First argument will be the request argument. First argument always be the request argument. What about the second one? Second argument will be a year with the value which you already passed to access that. मतलब अगर मेरा URL इस तरीके से है, अगर मेरा URL इस तरीके से localhost colon 8000 slash articles slash 5000. Okay, so like इसके equivalent मेरा function कैसे call होगा? Like इसके equivalent मेरा function views नाम की file से call होगा. So views dot, in short, like function from the views file, views module actually. So views dot year archive, views dot year archive. The first argument will always be a request. Second argument, this 5000 will pass as a keyword argument. This 5000 will pass as a keyword argument. So this function will like called by the Django, like will automatically called by the Django framework in this pattern actually. Views dot something, in short, whatever the function you write down over here. Then request, that will be always the HTTP request argument, and then आपने जो भी डेटा यहाँ वेरिएबल के नाम के साथ रखा है. So अगर उसी तरीके से इस फंक्शन की बात करें month archive, so it will be invoked like this. Let I copy this. So अब यहाँ हम लोग दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, like localhost articles 5000. 5000 is for year. 5000 is for year. And what about month? Let I just say month is December. In short, 12. Okay, month is December. Let I just say 12. So that will be invoked like views dot month archive request year 5000 and month 12. Okay, so इस तरीके से कुछ कॉल होगा text type. Okay, so I hope ये समझ में आ रहा है. So now my question is, sir, ऐसे कौन कौन से data type support होते हैं? So lastly we discussed the data type also. And so by default Django supports this much of data type in a URL. str, that means string, integer, slug, UUID, and path. We already gone through this one. So this much of data types actually Django supports in URL pattern. Okay, so that's that. Now another thing is यहाँ तक हम लोग को कोई problem नहीं था. Now another thing is whenever client will like a request, client in the sense consider browser. So जब आपने browser के through request place किया, that request will be placed to the otherwise that request will be forwarded to the Django. So now what Django will do actually, 1 minute, yeah. So consider this is client, and this is our Django framework. Consider this is our client, this is our Django framework. Okay, so this is our Django framework, and here in this Django framework we have some our application. This is our application actually. Consider my application name is first step. So this is my application. Okay, inside some project. So हम लोग generally project Django framework के साथ map करते हैं, तो consider it is inside the Django. So जब client यहाँ से request place करेगा, that request will be forwarded to Django. Now what Django will do, वो actually urls.py नाम की file जो आपके project के settings के अंदर होगी. Let I create one more. So this is my first application inside our project. So consider this is a project. Now let I just say this is my website. So this is my project. Okay, this is my project and this is my application. So in application we will have actually views.py file. Inside that some methods are there. But in project we will have actually settings.py, and one more we just discussed, that is urls.py.
So now what will happen जब आप यहाँ से request place करोगे, let I just say this is a client. So client से जब आप request place करोगे, that request will be forwarded to the Django framework. Or you can say the Django server. Okay, now right now अगर आप server start कर देते हो, then it's nothing but a Django server. तो आपका request Django server के पास जाएगा. What server will do? Your Django server will just check that thing in actually urls.py. आपका जो भी request होगा वो urls.py में check करेगा. urls.py actually returns the function name. जैसे कि हमने यहाँ पे discuss किया था कि consider this is my URL. So this URL will be forwarded to the Django framework. Now Django framework actually try to map this URL. Just forget about, like, just ignore this localhost colon 8000. Why we have to ignore this? Because this is nothing but a server address. Okay, now consider, let I just copy and paste the whole thing. So let me just write on over here. Okay, now consider this is the request. This is the request. Okay, so in this request, this part is actually server address. Okay, up to localhost colon 8000 is actually server address, and remaining URL we have to find out in actually urls.py. So URL find in urls.py. So this thing we have to try to find out in urls.py. Which thing we have to find out, guys? So this is the part which we have to py, and yeah, and this part is nothing but an actually server address. So I hope that is clear. Now what urls.py will return? Actually urls.py, जैसे हमने इतना कुछ लिखा, what urls.py will return? urls.py will return actually function name. Otherwise it will call the function. Okay, urls.py actually will returns the function, or according to that function actually Django server will call that function. Okay, so यहाँ से ये function call होगा. Which function it will invoke? It will invoke actually views dot month archive and something like that. So according to that URL, our Django will call this function. Our Django will call this function actually. Okay, so Django will call this function. From views.py, otherwise defined in views.py. Okay, तो ये function call करने के बाद अब Django का कामकाज क्या था? So the simple task is Django को किसी ने request place किया था, तो उस request का उस भाई साहब को answer देना है. So वो just make a request to Django. Actually, client already make a request to Django by this URL. तो अब Django ने उस URL के लिए क्या कामकाज किया? तो first task is उसने urls.py से कुछ pattern find out किया, कोई function का नाम find out किया, उस function को call किया. Now Django is responsible. Okay, किसने function call किया है? Django invoke the function. Okay, Django server invoke the function. In short the thing is, जैसे मान के चलो आप एक होटल के अंदर है, आपने वहां पे रिक्वेस्ट किया, वेटर को बुलाया, जो भी अपने सर्विस प्रोवाइडर था उनको हम लोगों ने जस्ट एक रिक्वेस्ट किया, सर आई वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ like I want a specified actually vegetables. Okay, otherwise I want actually water, like a bottle of water. Okay, तो हमने उसको कुछ रिक्वेस्ट किया, I want a particular item, let I just say a particular item, otherwise item A I wants. So client ने रिक्वेस्ट किया, client रिक्वेस्ट किसको करेगा? But obvious client will make a request to waiter. So उसने वेटर को रिक्वेस्ट किया, otherwise उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया. Now waiter will move to the actually किचन में जाके वो वहां पे जो भी कुक या सेफ जो भी होगा उनको उन्होंने रिक्वेस्ट प्लेस किया कि दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, अदरवाइज दिस इज द क्लाइंट ऑर्डर. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर, लाइक पर्टिकुलर गाय, इन शॉर्ट लेट आई से, लाइक वहां पे जो भी बंदा मतलब कुक और द सेफ विल actually generate some, otherwise like develop some otherwise will cook some particular item. तो जो भी आपने ऑर्डर किया था उसने उस आइटम को मिक्स अप किया, बनाया, then what is the what will be the result? वो आइटम का ऑर्डर किसने किया था? आपके पास किचन के अंदर जो वहां पे पर्सन वर्क कर रहा था वो किसको जानता है? बट ऑब्वियस दैट गाय विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर आइटम जो उन्होंने बनाया हुआ है. ओके, जो आइटम उन्होंने डेवलप किया वो आइटम वो किनको रिटर्न करेगा? बट ऑब्वियस दैट किचन गाय विल रिटर्न दैट आइटम टू द वेटर ओनली. ओके, इन द सिमिलर वे हमारा फंक्शन किसने कॉल किया था? वो इन्वोक दिस फंक्शन. हमारा ये जो फंक्शन था views.monthArchive, वो इन्वोक दिस फंक्शन, बट ऑब्वियस Django ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था. सो गाइस, इस फंक्शन का रिस्पांस भी Django को मिलेगा.
now वो response actually चाहिए था किसको? That response actually required by this client. वो response actually इस client को चाहिए था. So who is responsible to return the response? But obvious Django. So यहाँ वाया काम हो रहा है. Client ने Django को बोला, Django ने कोई particular function call किया. अब वो function का आंसर भी Django को ही मिलेगा. Now Django is responsible to return the answer to client. But now the question is, okay, ये mechanism हम लोग को already पता थी. But now the question is, sir, which type of response expected by Django? In short, अभी हम लोग यहाँ तक conclusion में पहुंचे. A client will make a request to Django server. Django server, according to that request, Django server will just check in a urls.py and will find out a particular mapping function from views.something and will call, otherwise will execute views.some method name. Okay, now what will happen? ये जो आपने यहाँ पे method execute किया, उसका response किसको forward होगा? But obvious the response will be forwarded to Django framework. Sorry, Django server. Response will be forwarded to the Django server. अब वो response यहाँ पे पहुंचा. अब वो response actually मुझे किसको forward करना था? मुझे ये response actually client को देना है. मुझे ये response actually client को देना है. But now the question is, sir, client मतलब कौन? Client मतलब but obvious a browser. So browser can understand only one thing, and that is nothing but HTML. So Django responsible है client को HTML data देने के लिए. Django responsible है client को HTML data देने के लिए. So Django server, Django सीधा बोलेगा, भाई मैं कुछ conversion नहीं करने वाला, मैं तो intermediator हूँ. Okay, मतलब हमने waiter को बोला, waiter particular like kitchen में गया, वहां से उन्होंने items ली और items को उसको deliver करना. Then Django simply say, sir, मैं सिर्फ आप जब भी मुझे request करोगे, consider we have 3 different counters. Let I just say I counter 1. Otherwise we have 3 different. We are just providing 3 different type of dishes. The first one is Gujarati, second one is Punjabi, third one is Chinese. And for all these different type of dishes, we have 3 different kitchen. First one is Gujarati kitchen. It's a Gujarati kitchen in the sense I mean to say the kitchen in which actually Gujarati food is generally cooked. Okay, so Gujarati kitchen, Chinese kitchen, and Punjabi kitchen. So now consider we have in our hotel, in our restaurant, some guy came, some clients come out and just say, oh, I want a Gujarati dish. Then what waiter will do? Waiter उनका order लेके Gujarati kitchen में जाएगा. That means what I mean to say, particular type of request को उसने map किया. कोई एक particular type के request को वो waiter ने map किया. So consider, otherwise compare our waiter with the Django server. उसने सिर्फ mapping किया. अब Gujarati kitchen में से उनको जो answer मिलेगा, वो answer Django server, in short our waiter will forward to client. But what is the expected? Client का expectation क्या होगा? भाई मुझे एक dish के अंदर पूरा arrangement करके देना. जैसे हम लोगों ने वहां जाके कुछ लाइक सब्जी वगैरह कुछ भी ऑर्डर किया, वेजिटेबल्स वगैरह, तो कुछ डेकोरेटेड होके आता है. ओके, वो ऐसा ना हो कि पॉलीथीन में लेके दे चल भाई खा ले, लाइक दैट. ओके, पार्सल लेके जाओ, तो पार्सल भी होगा तो पूरा अच्छे से पैक्ड होगा. सो आई मीन टू से Django सर्वर उसको सजाएगा नहीं, उसको डेकोरेट नहीं करेगा. इन शॉर्ट आई मीन टू से हियर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डेकोरेशन. एक्चुअली क्लाइंट वांट्स अ डेटा इन HTML. Client wants a data in HTML. So Django server is not responsible to convert your response. Response किसने generate किया था? Actually, some method of the views will generate the response. So that response will be directly forward to Django. But Django having no code to convert your response in HTML, and after that it will not forward that to client. Django का simple सा concept है. It will just fetch the response and will forward to the client. That's it. So now, who is responsible to convert the response? Who is responsible to convert the response of HTML? So, but obvious views methods, views functions are responsible. Okay, so actually, in this views method, what we did, we have actually Python code. So what we have to do finally? So we are responsible. ये function हम लोगों ने बनाए थे या हम लोग बनाएंगे. So in this we have to convert the Python output to HTML code. Okay, उसमें convert करना पड़ेगा. And after that, have to return, otherwise can return this HTML code to Django server. Okay, so this thing we have to be careful. ये हम लोग को actually ये task करने पड़ेंगे. We have to write down the Python code
to just make a response. Python code पहले लिखिए, उस response को आपको HTML में convert करना पड़ेगा. And finally, the converted HTML we can forward to the actually Django server. Okay. Now to return this data, अब हम लोग को actually Django को कुछ return करना. Let I say कि मेरे पास दो function है. मैं एक simple सा example बता रहा हूँ. Let I say I have a first function and I have another function that is second. Now, what is my requirement? Consider second function wants to call the first function. Like our the same pattern. Actually, Django just call our methods. Django server just to make a call to our methods. So in the same way, मैं यहाँ पे same mechanism बना रहा हूँ. Second function just call the first function. Second function just call the first function. So what is my requirement? My target is जैसे ही आपने first function call किया, I will just execute some code. Let I say मैंने लिखा oh welcome. So this is my Python code. So consider it's pretty simple, but consider this is my Python code. I just create a variable. But my requirement is this code must be returned. This code must be returned. Otherwise, output of the first function must be returned to the invoking function, to the calling function. मतलब जिसने इसको call किया मुझे उसको data return करना है. तो हम क्या बोलेंगे sir? It's pretty simple. You have to just write down return it. आपको सिर्फ return a लिखना है. So अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से call किया होता x equal to first, what will happen? जैसे ये फर्स्ट फंक्शन रन होगा, इसका रिस्पॉन्स एक्चुअली यहाँ पे पहुंच जाएगा. सो एक्चुअली ये Django सर्वर मान लीजिए, ये Django सर्वर मान के चलिए. सो Django सर्वर जनरली in short Django server just call your function and expecting a return value. Okay, Django server calls a function and expecting a return value, or always accepting a return value. So what we have to do, so we have to just define a views method. And to return some HTML code to the Django server, we have to always use the return statements as a last statement. Always we have to use this. Okay, ये return नहीं करोगे तो आपको वहां से response generate नहीं होगा. So I hope that is clear. Okay, so आपने जो views में जितने भी functions यहाँ पे define करने, views में जितने भी functions define करने, but obviously we have to return all the functions must return. Okay, देखो actually consider let I have 100 functions. And 90 functions actually returns the data, but 10 functions does not return the data. Okay, मान लो मेरे पास 100 function और 10 function data return नहीं कर रहे. So guys, like these functions actually we cannot map in this urls.py. Okay, आपके 10 function हम ये urls.py में map नहीं कर सकते. इन Django के साथ direct communication में use नहीं कर सकते. हो सकता है कि internally वो लोग use करें उस function को. I have total 100 functions. So उसमें हो सकता है कि 90 functions को मैंने urls.py में map किया, and these 90 functions will use remaining 10 functions for some task. Okay, for some to just reduce the redundancy and etc. So I hope that's clear. I hope that is clear to everyone. So what we have to do now, if you want to generate a particular type of if you want to generate particular type of response, you have to write down the Python code in your views.py. But be careful, you are responsible, or whatever the developer is there to just define a views.py. That particular developer is responsible to convert your response, to convert your Python code response in HTML. Okay, we are responsible. And we have to just return this response to Django. So for return, we have to just use a return statements. Okay, so return statements ही लिखना. Now another thing is, sir, how to just convert our response in an actual HTML code. इसको HTML कोड में कैसे कन्वर्ट करें? So we have a function. जैसे मुझे a को HTML कोड में कन्वर्ट करना है, then we have to just write down HTTP response. We already learned this. Okay, we already completed that topic also. We have to just write down return HTTP response and a. So what will happen? This a will be converted in HTTP format, otherwise in HTML code, and that thing will be forwarded to this X. That is the first thing. But now consider, sir, I want a bold value. मुझे actually इसको bold में convert करना है. Otherwise, I want to convert that particular thing in italic. Okay, I want to just increase the font size. I want to increase. I want to just provide some CSS type of effect. I want to just give. So in short, मुझे पता ही था कि client HTML support करता है, तो I want to just use some HTML code to decorate my code, to decorate my output. Okay, उसको थोड़ा decorate करना है, मुझे output को थोड़ा अच्छे से represent करना है, तो मुझे view part थोड़ा strong करना है. So what to do? Should I write down an HTML code over here? Yeah, you can. हम लोगों ने last session में ये भी किया था. We just create a tabular format. Okay, so let you just open that so it will be more clear. Yeah, here it is.
So this is get question function, and this function actually does returns this only a HTTP response. So consider हम लोगों ने यहाँ पे कोड ऐसा कुछ लिखा था, question dot objects dot get, that is actually DB API of DJango. Let's just try to find out a particular question and return it to the queue. अब get function always हम लोग को object return करता है. We know two functions to read the data, otherwise to try to filter out some data. So we have two functions, filter and get. Search करने के लिए दो function है, filter and get. Filter actually returns the query set object and get always returns the particular type of class object. So get ने मुझे यहाँ पे question का object return किया. So consider अब question का object जो मुझे मिला है मुझे actually client को देना है. So I cannot return a queue. ओके मैं क्यू रिटर्न नहीं कर सकता हूँ. सो व्हाट आई डिड, मैंने उस क्यू में से आईडी निकाला, उसका टेक्स्ट फाइंड आउट किया, उसका पब्लिकेशन डेट लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिस्पांस जनरेट करवाया. सो दिस इज माय पाइथन कोड, बट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिटर्न द आंसर टू द Django server. But Django server only understands an HTML code. So what we have to do, we have to convert our RES in HTTP response as it is discussed. Okay, जैसे हमने डिस्कस किया ये अपना कुछ कोड का आउटकम था, उसको HTTP रिस्पांस पर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करना. दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द Django server and Django server actually client को रिटर्न करना. But in this I didn't use any HTML code, but consider I want to create a table. So now in all questions I just try to find out all the questions. तो जितने भी मेरे पास questions हैं मैंने सबके सब सर्च किए. Okay, now this all actually will return a query set object. Query set in the sense it's a one type of array. It's a list. Okay, it's a one type of array. It's a list type of thing. List in the sense that's a dynamic array. Dynamic array in the sense consider अगर हम array की बात करें तो मान लो मैं C लैंग्वेज में एक array बनाऊं तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे. लेट ऐसे integer a of 6, तो इसकी कैपेसिटी 6 एलिमेंट की, अगर आप 7th एलिमेंट इंसर्ट करने की ट्राई करोगे इट मेक ए बग. like okay, array is already overflow. Okay, so it has a capacity to store only 6 elements. So that is static in nature, but I want to create a dynamic array. Dynamic array in the sense जितना भी आप डेटा एंटर करना चाहते हो वो अपने आप अपनी साइज इंक्रीज करता जाएगा. Okay, so actually this all function will return a list actually. Query set is one type of. Okay, तो मैंने एक लिस्ट बनाया. Now how to work with the array? So what we did, मैंने सिंपल सा लिखा था for q in LST. So that's actually a for each loop. So q in the sense एक टेम्पररी वेरिएबल जो लिस्ट में से एक क्वेश्चन फॉरवर्ड मतलब फेच करेगा, एक क्वेश्चन फेच करेगा, बाद में हम लोग ये सेम कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं. क्वेश्चन डॉट आईडी, क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट एंड पब्लिकेशन डेट. तो हमने वही चीज लिखी, क्यू आईडी, क्यू क्वेश्चन टेक्स्ट एंड क्यू पब्लिकेशन डेट. बट नाउ आई डू नॉट वांट टू फॉरवर्ड अ प्लेन टेक्स्ट. मुझे एक्चुअली टीआरटीडी और टेबल टैग मुझे यूज करके उसको एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था. सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट ऐड सम एचटीएमएल कोड. Okay, but that is a tedious task. HTML कोड यहाँ लिखना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा. Python कोड के साथ HTML कोड लिखना मुझे अच्छा नहीं लगा. And finally what I did, मैंने इस RES को once again HTTP response पे convert किया. This response will be forwarded to the Django. Django will forward that to the client. So client में actually a tabular format में data लिखेगा. So we applied the same thing over here also. So that's that. But now what is my next requirement? My next requirement is, sir, this is not a good task. Like this is not a good way to just embed our HTML, embed our connect our HTML, plugged in our HTML with a Python code. This is not a good way. So is there any other option? So another option is you can just create a template. What do you mean by template? So guys, can you please tell me what is template? In normal language, in real life, आपने template कहीं तो सुना होगा. Template and pamphlet. Okay, what do you mean by template and pamphlet? Yes, anyone? What do you mean by pamphlet? Pamphlet रोज आपके मतलब वो न्यूज़पेपर में आते हैं वो. Just guys, fast. Harsh bhai, Parthiv sir, Yash. Okay, template I hope सबको पता है जो न्यूज़पेपर में आता है. ओके, और टेम्पलेट आपने अपने मोबाइल के इनबॉक्स में कहीं देखा होगा. मोबाइल में मैसेज के साथ जैसे इनबॉक्स से सेंड आइटम से आउटबॉक्स से, इन द सेम वे यू विल हैव एक्चुअली टेम्पलेट. टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर भी होता है. और टेम्पलेट के अंदर जाके चेक करोगे तो उसमें लिखा होगा आई विल कॉल यू लेटर, राइट नाउ आई एम बिजी, आई एम ड्राइविंग एंड एटसेट्रा थिंग. सो सम प्री डिफाइंड मैसेजेस आर देयर. ओके, बट गाइस जब मुझे किसी को मैसेज करना है तो एक्चुअली मुझे दो चीज की जरूरत होती है. द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज आई रिक्वायर्ड अ मोबाइल नंबर. इन शॉर्ट जिसको मुझे एक्चुअली मैसेज करना है, सो सेंड नंबर, रिसीवर नंबर. So I required receiver number and message body I required. These are the mandatory things. Okay, ये दो चीज मुझे चाहिए. अब कौन से टाइम पे भेजा, किस बंदे ने भेजा, वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है. But these are the mandatory जो यूजर को ऐड करना है. किसको मैसेज करना है
and what is the message. So template in the sense what? Template in the sense what? Message is already prepared. Message is already there. You have to just fill some blanks. Okay, आपको कोई एक particular part वहाँ पे missing है, you have to just fill that. Let I just give you one more example. आपने application form काफी सारी जगह पे fill up किया होगा. Okay, so application form in the sense what? It's a one type of letter. It's a one type of letter, but some parts are already filled. जैसे कि आपको पहले लिखा होगा, just write down your name here, just write down your age here, just please select your gender. तो gender में actually पहले से दो टिक मतलब पहले से दो ऑप्शन दिए होंगे, मेल एंड फीमेल. लेट ऐसे मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो उसमें 10 बॉक्सेस दिए हुए हैं. इन शॉर्ट आपको पहले से पता चलेगा वी हैव नॉट टू राइट डाउन द कंट्री कोड +91 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, जैसे आपको वहां पे एक्चुअली लाइक पिन कोड लिखना होगा तो वहां पे 6 डिजिट्स दिए होंगे. काफी जगह पे अभी मैंने टेम्पलेट्स ऐसे भी दिखे हैं कि लाइक आपको ईमेल आईडी लिखना है तो पीछे @gmail.com लिखा होगा. ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि काफी सारी चीजें कंप्लीट होगी. यू हैव टू जस्ट फिल सम एरिया, you have to just fill the blanks. So that is actually template. मतलब फॉर्मेट रेडी है भाई, आपको उस फॉर्मेट के अंदर ही डेटा पुट करना है. जैसे आपको बोला प्लीज राइट डाउन योर फर्स्ट नेम, बट इफ यू वांट टू राइट डाउन योर फुल नेम देन इट्स नॉट अलाउड, then it is not allowed. Okay, let I just say a simplest template is either of the form you can just say as a template. So according to me, okay, this is not a login screen, let I just open a Facebook. So this is a template for me. Okay, I am not developing a particular page. मुझे as a user इसमें login करना है. So मुझे कोई चीजें fill up करनी है. I have to fill up this login. I have to just fill this email pass and password part. Okay, मुझे दो area fill करना है. So that's a template for me. Okay, so what is the meaning of template? Template in the sense what? Some area are missing. Some part of the form is missing actually. So you have to, as a user, you have to fill that area. As a user, you have to fill that area. That is the template. What about pamphlet? So pamphlet भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जो अपने घर पे एडवर्टाइजमेंट्स के पैम्पलेट्स आते हैं. ओके, न्यूज़पेपर के साथ जो एडवर्टाइजमेंट्स के पैम्पलेट आते हैं उसमें कोई भी एरिया फिलिंग मिसिंग नहीं होता. इवन दो यू कैन से न्यूज़पेपर इज ए टेम्पलेट. ओके, न्यूज़पेपर इज आल्सो एज ए पैम्पलेट. सो इसका एग्जांपल देखें तो न्यूज़पेपर. ओके, दैट्स नॉट रिलेवेंट टू अवर टॉपिक, बट नाम लिया तो दे कंप्लीट कर लेते हैं. सो टेम्पलेट इन द सेंस न्यूज़पेपर, उसमें कोई एरिया नहीं होता जहां पे आप लिखोगे, बट ऑब्वियस स्टिल हम लोग ऊपर मोबाइल नंबर कुछ डिजाइन वगैरह करते रहते हैं. दैट्स अनदर थिंग. ओके, वहां पे लिखना नहीं होता. बट इज इट ओके? सो व्हाट इज पैम्पलेट एंड व्हाट इज टेम्पलेट? सो नाउ our topic was actually, sir, Django just make a request, sorry, client just make a request, that request will be forwarded to Django server ने actually urls.py में चेक किया, urls.py से उसको कोई पर्टिकुलर व्यू का फंक्शन का नाम मिला, उस फंक्शन को भाई साहब ने एग्जीक्यूट किया, रिस्पॉन्स वापस एक्चुअली Django सर्वर पे पहुंचा, Django सर्वर ने वो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड किया क्लाइंट को. ये हमको मैकेनिज्म पता चले. बट नाउ व्हाट्स द एक्सपेक्टेशन? अभी Django सर्वर का एक्सपेक्टेशन क्या है? सर मुझे HTML कोड चाहिए. किसने बोला? Django ने. Django just say I want only an HTML code. Django just say I want only an HTML code. Okay, so we have first option, you can just generate the response and convert that response by using this HTTP response class. That's the first option. Another option is, but इसमें क्या होगा, मुझे हर एक कोड के आगे HTML कोड अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए, तो हम लोग को ये पाइथन कोड के साथ ही HTML कोड लिखना पड़ेगा. तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है. इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क. जैसे मैं CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह इंक्लूड करूं, then it will be a complex task. So what is my requirement? What I have to do? So what is my requirement? मैं एक ऐसा काम कच करता हूँ कि like पहला ऑप्शन है HTML रिटर्न करने का, that is actually HTTP response. That's actually HTTP response. Another one is, let I just create a template. What is template? What is template? So some area are missing actually. So इस template के अंदर मैं कुछ HTML कोड already कहीं बना के रखूंगा, and some part I will just मैं सब कोई जगह खाली छोड़ूंगा. So some parts is actually waiting. ओके, कोई पार्ट उसके लिए वेट करेगा, और ये पार्ट इन फ्यूचर पाइथन कोड से रिप्लेस करेंगे. नॉट द पाइथन कोड, एक्चुअली पाइथन डेटा से रिप्लेस करेंगे. सो फाइनली माय HTML पेज इज जनरेटेड. तो जो मेरा HTML पेज जनरेट होगा, आई विल जस्ट रिटर्न दैट HTML पेज टू एक्चुअली Django server. Okay, now Django server will return that HTML page to client. That's it, my task is done. So today our topic is how to create a template. Today our topic is actually how to create a template. So what we have to write down in our template, guys, you can just write down your HTML part, you can just use a CSS part, you can just use your JavaScript part, even though you can just write down a bootstrap plugins, you can just use over there. In short, anything जो आप normal website बनाने के लिए use करते हो, view part में जो भी आप use कर सकते हो, like आप इसमें images का URL भी दे सकते हो, it's up to you.
ओके ऑडियो वीडियो भी दे सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट ये अगर सेम चीज अगर मैं ये व्यूज के फंक्शन के अंदर लिखूं देन इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये सब कुछ HTML के साथ इन शॉर्ट टेम्पलेट पार्ट में रखूंगा। बट सर ऐसा ना हो कि हमारा डेटा रह जाए, डेटा डायनेमिक रखना है। जैसे कंसिडर मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे व्यू फंक्शन थे, आई हैव 3 व्यू फंक्शंस, जो तीनों को एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करना है, तीनों को टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करना है। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मैं 3 फंक्शन बनाऊंगा, तीनों में एक्चुअली ये टेबल वाला कोड मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे कि right now in this example, yeah, here it is, we have 2 functions, all question with a particular limit। so देखो यहाँ पे भी मैंने tabular format generate किया, here also we just write down the code to generate a tabular format। so this is not a good idea, एक ही कोड में 2 बार लिख रहा हूँ, this is not a good idea। so what is my requirement, मैं HTML वाला कोड कोई एक जगह पे लिख लूं, HTML वाला कोड कोई अलग फाइल के अंदर लिख लूं, और मेरा डेटा क्या था सर, डेटा इज एक्चुअली LST, डेटा इज एक्चुअली LST, इसके अंदर डेटा था, जस्ट चेक, यहाँ पे एक्चुअली LST के अंदर डेटा था। सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, वो HTML कोड को मैं LST दे दूं और वो वहां पे लूप चला ले। ओ वेट फॉर अ मिनट, सर आपने बताया था कि टेम्पलेट इन द सेंस उसमें HTML कोड होगा और आप उसमें पाइथन डेटा भी दोगे, तो ये लूप की बात कहां से आई? लूप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है और ये तो आप HTML में बनाने वाले हो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जो डीजेंगो ने अपने टेम्पलेट के लिए यूज किया। ओके सो यहाँ पे कुछ नया अपने को लर्न करना, इट्स टू मच इजी। ओके बहुत इजी है, यू हैव जैसे लाइक इट्स लाइक अ JSP, इट्स लाइक अ PHP, इट्स लाइक यू कैन सिंपली से दैट ASP। ओके सो इट्स प्रीटी सिंपल आपको एक्चुअली जैसे JSP का काम काज होता है जावा को HTML के साथ कनेक्ट करता। okay so in the same way actually यहाँ जो language हम discuss करेंगे it will just plugged in like Python data with the HTML or CSS type of thing। so आपके Python data को आप यहाँ पे अगर connect करना चाहते हो then you have to just use that template language, you have to use that template language you have to use। okay so HTML कोड वहाँ पे already होगा, okay HTML कोड वहाँ पे already होगा, पाइथन कोड भी ऑलरेडी होगा, इन शॉर्ट जो टेम्पलेट लैंग्वेज है वो भी ऑलरेडी होगा, बट दैट पर्टिकुलर पेज इज वेटिंग फॉर एक्चुअली डेटा। तो जैसे आप डेटा अंदर दोगे इट विल जस्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा, वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, विल जनरेट HTML फॉर्म, विल जनरेट एन HTML कोड और HTML पेज इट विल जनरेट एंड रिटर्न टू द डीजेंगो सर्वर। आई होप दैट इज क्लियर गाइस। तो कांसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है कि हम लोग टेम्पलेट क्यों यूज कर रहे हैं? because I do not want to mix up the data, that is the first thing। मुझे अपने इस views.py को मिक्सर मतलब एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। सेकंड थिंग इज सेम डेटा मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करना, okay सेम डेटा मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करना है। वन मोर प्रॉब्लम इज दैट कंसीडर मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने लाइन है गाइस, टोटल वी हैव 7 लाइंस। सो अगर ये 7 लाइन हमने पाइथन में लिखा देन पाइथन कंपाइलर एक बार सबको चेक तो करेगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट तो करेगा, सो इट टेक्स टू मच टाइम। अब इसमें से मैं HTML कोड हटा दूं तो and I will have actually 2 or 3 lines of code। Here we have, okay so here we have 2 or 3 lines of code अगर मैं HTML कोड रिमूव कर देता हूँ, so उतना कंपाइलेशन प्रोसेस भी बचेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना भी बचेगा, ओके एंड कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी, इन शॉर्ट मतलब एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दैट्स दैट। और इन फ्यूचर अपडेशन चाहिए देन इट इज अगर वो क्लियर कोड होगा तो आप इजीली उसको अपडेट भी कर पाओगे। नाउ दैट्स ओके, काफी सारी वाहवाही कर दी हम लोगों ने। Okay, so in short, finally, conclusion is we have to learn the template. That's that. Okay, so now this Django server accept only 2 things from the views.py। The first one is HTTP response, another thing is template। अब उसने परमिशन दी Django server ने, भाई मैं देख views.py को कॉल करूंगा या तो मुझे एक्चुअली HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न में चाहिए, अदरवाइज मुझे रिटर्न में यहाँ पे चाहिए टेम्पलेट। Okay, so now how to go with the template? So let me just go through this one। So to generate the template we have, this is the first option actually। how to create the template वो बाद में देखते हैं। now this is the first concept। let I say I have an index function, let us say I have an index function and here I am passing like I want to just actually want to fetch first 5 questions I want to fetch। मुझे पहले 5 questions चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, question dot objects dot ordered by publication date and colon 5। तो यहाँ कुछ नहीं लिखोगे, that means it's 0, so 0 to 5, in short 0 to 4, first 5, 0 to 5, sorry 0 to 4। okay this 5 is actually excluding in nature, so actually 0 to 5 लिखने का मतलब 0 to 4। once again it will return a query set, तो मुझे यहाँ पे query set मिलेगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन लेके हम प्रिंट करा सकते हैं,
but what I am doing actually मेरे पास एक template बना हुआ है. Okay, so let us just open this template also. मैं बाद में आपको बताता हूँ कैसे develop करना है, but let me just open this template firstly. So this is my template. Okay, now you can just say, oh, it's not an HTML code actually. ये HTML code जैसा नहीं लग रहा, but some HTML tags are used, जैसे कि UL for actually bullet type of thing. Okay, that is actually unordered list. Then li and hyperlink I have. Li and then hyperlink I have. Okay, so something like that. तो मैंने यहाँ पे कुछ set किया हुआ है, and UL is over here. I have a paragraph tag I have. So an extension also for this page, actually extension also is HTML. Okay, तो HTML से ही आपको सेव करना है. तो consider you have a template. आपके पास कुछ template है. Okay, so now in picture I have things. Now I have two things. The first thing is actually I have a template. Let I just draw that template first. Yeah, 1 minute. Huh? So now I have a template. So consider this is template, and one more I have, that is views.py. So now views.py having a data. This is my views.py. And this is our template. Okay, now what is our next requirement? What we have to do, actually आपके पास data views.py में था. So you have to pass the data from views.py to template. आपको यहाँ से यहाँ data pass करना पड़ेगा. So now how to pass the data? Then only a single way is there. You have to create a dictionary. You have to create a dictionary in views.py, and you can pass the dictionary to the template. Now, what is dictionary and how to work with the dictionary? So dictionary is nothing but a group of items. It is nothing but a data structure, okay, which can just use to represent the data in key value pair. Let I say मेरे पास एक student का data था. Let I just say name is Harsh, age is 21, age is, let I say 20, and college name is CK Pitawala. So I want to pass this data. I want to pass this data to particular guy. Okay, तो मेरे पास तीन चीज थी. तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले एक की बनाना है, name. उस नेम के साथ उसका वैल्यू. सो हर्ष, नेम इज हर्ष. सो हर्ष इज एक्चुअली वैल्यू. ओके, ये एक वैल्यू है, बट व्हाट अबाउट दिस नेम? इट्स एक्चुअली की. इट्स एक्चुअली की. अगर आपको जेसन पता है, देन इट्स लाइक अ जेसन. ओके, नाउ कॉमा से सेपरेटेड होगा. दूसरी चीज क्या थी? सो सेकंड वन इज नथिंग बट एज डेटा. थर्ड थिंग क्या था गाइस? दैट इज एक्चुअली कॉलेज नेम. दैट्स एक्चुअली कॉलेज नेम. सो कॉलेज नेम इज एक्चुअली CKP. So that's that. Okay, so in this format I will just pass the data. So that is my dictionary. You have to just use curly brackets. You have to just use curly brackets to create the dictionary and pass the data inside that. Okay, तो ये data मुझे ये क्या कहाँ पे create करना पड़ेगा? So but obviously we have to create that thing in a views.py, and that thing we have to pass to the template. Particular type of template. Like अगर template में आपके पास, यहाँ मेरे पास फाइल का नाम था first.html. हाँ, yeah, it's an actually index.html, not the first, actually index.html. तो उस index.html को आपको ये डेटा पास करना होगा. सो लेट मी जस्ट चेक. सो यहाँ मेरा डेटा किसमें था? मैं जितना हाईलाइट करूँ उस पर फोकस करना. सो दिस इज माय क्वेरी. मैंने डेटाबेस से डेटा फेच किया, एंड डेटा इज एक्चुअली अ वेरिएबल नेम दैट इज latest underscore question underscore list. ओके, ये डेटा मुझे किसको पास करना है? दिस डेटा आई वांट टू पास टू एक्चुअली index.html. Okay, so what I have to do, मुझे actually dictionary बनाना पड़ेगा. So just focus on this code. I just create a dictionary. What is the name of dictionary? That is context. Context is equals to this is key. आप इस key की जगह कुछ भी लिख सकते हो. Let I just say A. So A colon your variable name. So variable name मान लो आपका M है, then just write down M here. So this is my dictionary which I have to pass to a particular template. Okay, so now let I just do like undo कर देते हैं हम लोग. Okay, so that's a dictionary. So मेरे पास पहले data आया, मैंने उस data को actually dictionary में convert किया. Now just load the template. So how to load the template? For that we have a loader. That's actually predefined module. In Django. So you have to write down from Django.template. Please load that particular template. Okay, please load that particular template. So right now I just load the template. Where is your template? It's just right on the location of that. Okay, I want to load this template. So right now template is in a template variable and dictionary is an actual context variable. So what I'm doing, so what's the expected response for, like what's the expected response from this views.py? Django क्या expect कर रहा है? तो Django expecting either HTTP response. So अब मेरे पास अपने Python code में दो चीजें. I have a template as well as I have actually context.
So इन दोनों को मैं combine करूंगा. For combining, I'm just using template.render in the bracket context and request. What is the template? It's my variable name. So template.render in the bracket whatever your dictionary name and request object. So this is pretty complicated code. अगर आप ये use नहीं करना चाहते, then we have another option. And this is a shortcut. We will use this one throughout the project. Okay, we will not use this concept. So what I did, I just get the value as a line number 38. It is equivalent to line number 38. मैं यहाँ सिर्फ 0 नहीं लिखा. 0 लिखो या ना लिखो, it's optional. Okay, so पहले मैंने data लिया. This is actually line number 40 to 42. I just create a dictionary. मैंने पहले data लिया, मैंने dictionary create किया, and I used a render function. Directly I use the render function. So render in the bracket request. So request in the sense जो आपने request variable use किया था, Django से request accept करना. So render in the bracket request. This is your template location, and last one is nothing but a dictionary value. So just return the render variable. Return the render variable. तो ये return कहाँ पे जाएगा? It will be returned to the Django server. Now Django server actually वहाँ से उसको path दिया हुआ है. Django server को हमने path दिया है, वो वहाँ पे जाके उसको rendering कर देगा. Rendering मतलब view part generate करके आगे forward कर देगा. So this mechanism we will use. Always we will just use the syntax. The first one was always a request argument. Second one will be actually a path. कौन से template के साथ work करना है. And third one will be a, what will be the third one? So third one will always be a dictionary जिसके अंदर आपका actual data होगा. Okay, so ये sequence आपको याद रखनी है guys. This is the format. Okay, this is actually a prototype. You can say that that's a method prototype, function prototype. Okay, तो हम लोग अगर कोई function call करते हैं तो उसकी prototype follow करनी पड़ती है. तो always expecting the first argument, that is a HTTP request. Second one is the path of your template, and third one is always be the dictionary. So ये data हमने pass किया. Before that I just create a data. This is a Python code और ये हमने rendering किया. That's that. Now let me move to the template actually. So यहाँ से आप क्या data pass कर? Sir, I'm passing context. Context means it is a dictionary. So dictionary के अंदर है क्या? So I am having actually dictionary के अंदर देखो, अगर मेरे पास कोई dictionary available है, let us say this is the dictionary. अब ये dictionary मान लो मैं कोई particular like Django और particular language को forward करूँ, so उसको अगर उसमें से data fetch करना है, तो data कैसे fetch किया जाता है? So data इस तरीके से fetch होगा. Dictionary का नाम, then colon name, and then age, then actually college name. So what is that? Actually this is nothing but in key name. So using this key you can fetch the data. Using this key you can fetch the data, but you must have a dictionary. So in this template what I did, what is this? It's a key name. What is that? It's a key name. So by default वो dictionary यहाँ पे extract हो जाएगी. Directly you can just use the key name. So मैंने यहाँ पे क्या लिखा? If what is this? ये क्या है? So this is actually key name जो आपने यहाँ से pass किया था. If you just pass a key name is A, तो मुझे यहाँ पे लिखना था A. Okay, if A, what is that, sir? So actually consider I have a dictionary. Sorry, I have a list. Consider I have a list. देखो मैं यहाँ पे list क्यों बोल रहा हूँ? Because as we know, जब हमारे question.objects.order by का जो return था, इसका जो answer आया था, that answer is actually a list. वो उसका answer हम लोग को list मिला. Okay, उस list को हमने actually ये key के साथ match किया, इस key के साथ connect किया, उस list को इस key के साथ connect करके एक dictionary बनाया था. ओके, तो टेम्पलेट में जाके जब आप इस की को एक्सेस करोगे तो आपको मिलेगा क्या? यू विल जस्ट गेट दिस डिक्शनरी, सॉरी यू विल गेट जस्ट एक्चुअली अ लिस्ट वैल्यू. तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू चेक ओए माय लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. सो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? सो मैं सिंपल पाइथन का कोड लिख रहा हूँ. a इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. सो इफ a मुझे चेक करना था इज इट एम्प्टी और नॉट. सो आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो. इफ लेंथ ऑफ a equal to 0, that means your list is empty. That is the first way. And this is the another way. अगर आप direct लिखो if a. So now let me just try to run this. So let I just run. Now my list is empty actually in this case. So my expected answer is B. So just check. The list empty है तो automatically B में चला जाए. Okay, now let I just write on something inside the list, and now let me check. So now A is executed. In short, if part is executed. Okay, so it's equivalent to this. अगर आप यहाँ पे सिर्फ if a लिखते हो, then it is equivalent to if length of a is not 0. Okay, if length of a is not equals to 0, तो अगर इस लिस्ट के अंदर कुछ होगा तो actually a part run होगा. In short, if part run, otherwise else part will execute. So just go through this one. So यहाँ पे condition check कि if something. But guys, what about this percentage and curly bracket? So that's actually template language. जहाँ पे भी आपको कोड लिखना है, you have to just start the curly bracket,
put the percentage and inside that you can write down the code. So मैंने यहाँ पे Python code लिखा, just check. Okay, मैंने यहाँ पे code लिखा. Now this is HTML code. This is HTML code. Now I want to just go through this loop. Okay, मुझे जो लिस्ट था उस लिस्ट में से मुझे वर्क करना था, तो हमने ऐसा कुछ कोड पहले भी लिख चुके. For some temporary variable in your list. Okay, so the same code is here for some temporary variable in and then your list name. Okay, that's that. So इसको मैंने once again curly bracket or percentage. That's it. Okay, this is for actually Python code. So now after that, this is up to this double curly brackets. This is actually HTML code. Now what about this double curly brackets? तो जब आप डेटा रीड करना चाहते हो, जब आप कोई पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जस्ट यूज कर्ली ब्रैकेट एंड परसेंटेज. इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे. बट अगर आप कोई डेटा रीड करना चाहते हो, जैसे हमारा एक क्वेश्चन क्या होगा, सर दैट क्वेश्चन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन. तो उसमें से डेटा लेना हो तो हम क्या लिखते थे, q.id, बट दैट q इज नथिंग बट एन टेम्पररी वेरिएबल नेम. सो q.id, q.questionText, q.publication date. तो ये सब कुछ कहां से आया मेरे पास. सो गाइस, हम लोगों ने मॉडल्स नाम का एक क्लास बनाया था. इन दिस मॉडल क्लास वी हैव सम डेटा मेंबर्स लाइक question_text, pub_date. So ये variables हम यहाँ use कर रहे हैं. question.id. Why question here? Because our temporary variable name is question. Again, the similar way, question_question text. So that's that. So this is a for loop. Now let me complete this UL. अब मान लो मेरा list empty था. Then I want to just write down no questions are available. And this is the end of if. So ये template language हम बाद में discuss करते हैं. But I hope that is clear to everyone. Okay, so now कहाँ पे ये template create करना है, वो सब कुछ बाद में देखेंगे. So पहले मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ. So let me just try to execute this one. Manage.py. Let I just write down run server. So localhost :8000. So listen, मेरे पास यहाँ पांचों के पांचों functions आ गए. ओके सर, ये किसने दिया और ये आगे बुलेट्स कहां से आई और हाइपरलिंक कहां से सेट हुआ. देखो अभी ये एरर दे रहा है बिकॉज बाकी के यूआरएल्स मेरे सेट नहीं हुए. ओके, जैसे क्वेश्चन एप अंडरस्कोर लाइक /2 क्विज एप /2 क्विज एप समथिंग लाइक दैट, वो यूआरएल्स मेरे सेट नहीं हुए. ओके, इसलिए वो एरर दे रहा है. बट 5 क्वेश्चंस ये कहां से आए, तो मैंने सिर्फ localhost :8000 लिखा था. लेट मी जस्ट ओपन urls.py. ठीक है, so in this urls.py I already mapped that. Where is that? Index वाली एक चीज मैप की होगी. Yeah, here it is. But I just cut in this one, paste it over here. Okay, so just check. हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा. मतलब जब blank request आएगा, then just call views.index. Just call views.index. So ये views के अंदर से actually ये index नाम का function call होगा. Where is it? Yeah. So index नाम का function call होगा. Where is the index? Yes, here it is. So index में हम लोगों ने template को connect किया. Okay, so I hope that is clear to everyone. Now, guys, यहाँ पे कोई doubt किसी को? Yes, anyone?